Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 23314444 and 23421050, and if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। यहाँ बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23421050। इस पर फोन करें और आप सवाल पूछें। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 अवश्य डायल करें। स्टूडियो में चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी लालिमा अनेजा डिंग। Dhanyawad Vibhuti. Yes, we begin with the headlines. Key domestic stock ends around 0.5% up. Sensex closes above 64,100 mark. Nifty settles near 19,150 level. Oil prices slip more than 1% ahead of a US Federal Reserve policy meeting, and Coal India subsidiary Southeastern Coalfields Limited achieves 100 million ton coal dispatch for 2023-24. घरेलू शेयर बाजार लगभग 0.5% बढ़त के साथ बंद। सेंसेक्स 64,100 अंकों के ऊपर बंद। निफ्टी 19,150 के स्तर के करीब बंद। यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी बैठक को देखते हुए तेल की कीमतों में 1% से ज्यादा की गिरावट। और कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 2023-24 के लिए 10 करोड़ टन कोयला डिस्पैच का लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज लगभग 0.5% ऊपर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 64,100 अंक के ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 19,150 के स्तर के करीब बंद हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों से सकारात्मक संकेतों के बीच दोनों सूचकांकों में तेजी रही। सेंसेक्स 330 अंक या 0.52% बढ़कर 64,113 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 94 अंक या 0.49% बढ़कर 19,141 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 0.13% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% की बढ़ोतरी हुई। The key domestic stock indices today ended around 0.5% up. The BSE Sensex closed above 64,100 mark, while the NSE Nifty ended near 19,150 level. Both indices rose amid positive cues from global share markets. The Sensex gained 330 points or 0.52% to finish at 64,113. The NSE Nifty also rose by 94 points or 0.49% to settle at 19,141. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.13% and the small-cap index added 0.06%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 16 companies appreciated while 14 companies declined. Ultratech Cement climbed 2.4%. Reliance Industries rose 2% and ICICI Bank jumped 1.3%. On the other hand, Tata Motors declined 1.9%, Maruti fell 1.5% and Axis Bank slipped 1.3%. In sectoral indices at the BSE, 15 sectors witnessed gains while 5 logged losses.
Realty sector jumped 2%, telecommunication gained 1.5%, and energy sector rose 1.3%. On the other side, auto sector declined 0.9%, consumer durables and energy both indices fell 0.4% each. The overall market breadth was positive as shares of 1,922 companies gained, while those of 1,813 companies declined. A total of 200 shares remained unchanged. रुपया का हाल जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपये 25 पैसे पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 106.46 पर नीचे था। So Yamini, after having touched 67,000 at one point of time, now we are back to almost hovering around 64,000. Today, 64,100 mark as we see that Sensex. How do you view this? It's been just about 0.5% up, which is not really high. How do you view the health of the Indian economy going by the Sensex? Sometimes they say Sensex is a barometer of a country's economy, our country's economy. Well, it is true that mostly people look at the Sensex to understand how the economy is doing. And whenever the Sensex climbs up, it is a positive direction seen towards the macroeconomic fundamentals of an economy. There have been global factors which have been affecting the Sensex, primarily the Middle East crisis that is there, the Russia-Ukraine war, as well as the crude oil prices which have been on a rise, and the challenges of inflation and the tightening of the monetary policy. Further, the facts that worked in favor of the Sensex were, one, it is a festive season. So from October onwards, this quarter remains a festive season. Also, the quarter 2 results have been out, which also have an impact on the stock markets. Another important aspect is that since the investors have become cautious, we did see last week that it did not do very well. But then usually after a profit booking, people do pick up stocks when they go a little low. So we have seen that in the European markets as well as in the Asian markets, we have seen people picking up the stocks again. इसी बीच कोलकाता से हमारे श्रोता हैं विकास महतो। विकास महतो जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। प्रश्न पूछिए। जी नमस्ते मार्केट मंत्र। नमस्कार। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर और डिफेंस सेक्टर अभी डाउन चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बाई करना और उसको एवरेज करना क्या सही टाइम है और इंकरेज करना पड़ेगा? प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर और डिफेंस सेक्टर। जी देखिए, प्राइवेट सेक्टर जो बैंकिंग है वो काफ़ी हद तक क्रेडिट दे चुका है और कोविड की वजह से काफ़ी हद तक एनपीएस के ऊपर भी असर पड़ा है। पर क्योंकि इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में चल रही है तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जहाँ तक डिफेंस की बात है, क्योंकि ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, इंडिया ने काफ़ी हद तक एक न्यूट्रल स्टैंड रखा है इन द जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, पर फिर भी डिफेंस एक ऐसा सेक्टर रहता है जो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहता है, प्राइमरली बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड हैं अपने नेबर्स की पोजीशन से या और पोजीशंस से, तो उनकी वजह से भी और बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से भी डिफेंस एक पॉजिटिव सेक्टर रहता है जिसके अंदर देखा जाता है कि एक पॉजिटिव ग्रोथ रहेगी। और ख़ास तौर पे जो इंडिजिनस सेक्टर है जो खोला गया है, जिसमें एक्सपोर्ट की मार्केट भी आ जाती है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर रहता है। जी जी, अभी लालिमा जी के सवाल पे आपने 2 दिनों का जो शेयर बाजार का हाल है उस पर आपने कुछ कारण भी गिनाए हैं। अगर अगले हफ्ते की बात करें, वहाँ के उतार चढ़ाव की बात करें, तो बहुत सारे हैपनिंग्स जो हैं वो हो सकती हैं। दूसरी तिमाही का नतीजा है, एफओएमसी मीटिंग है, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा है, क्या लगता है आपको? जी देखिए, काफ़ी फ़र्क पड़ता है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं ग्लोबल इकोनॉमी के, वो आपकी इकोनॉमी को भी इफ़ेक्ट करते हैं। ख़ास तौर पे जब एफआईआईज़ बाइंग या सेलिंग का कंसर्न हो, तो लास्ट वीक में हमने देखा था कि काफ़ी हद तक एक सेलिंग पोजीशन थी। अब जो है एक
पोजीशन फिर भी, क्योंकि इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हुआ है मिडल ईस्ट क्राइसिस को लेकर के, और जो ऑन गोइंग यूक्रेन रशिया क्राइसिस है और मल्टीपोलराइजेशन रही है उसकी वजह से, तो इन सभी मुद्दों को लेते हुए और जो मॉनेटरी टाइटनिंग की बात कर रहा है, जबकि आज की न्यूज़ अगर आप देखें तो उसमें नज़र आता है कि फेडरल रिज़र्व बैंक एक स्टेटस को मेंटेन कर सकता है और आगे फर्दर हाइक पे ना जाए, तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल रहता है। पर फिर भी क्योंकि ये टेंशन्स कंटिन्यूड हैं और रिसेशनरी स्टेट ऑफ अफेयर्स मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर नज़र आ रही हैं, वो सभी एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट को अफेक्ट करती हैं। श्रोताओं, आपसे आग्रह है कि आप 23421050 और 23310464 पे आप कॉल कीजिए और प्रश्न पूछिए। एक बार मैं फिर करता हूं रिपीट, 23421050 और दूसरा नंबर है 23310464। Yeah, let me also repeat the numbers. The numbers on which you may call, friends, is two numbers actually: 23421050 and 233-10464. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. We are eagerly waiting for your calls. Dr. Yamini, what about the forex reserves? We are sitting comfortably on very good forex reserves. Does that give us a good headroom for some inflation, for some kind of a disruption, as we see the way it's going on in the Middle East? There was war going on, and the US is under a lot of inflationary pressure. But we also are a consumer-based economy, and we are on strong fundamentals. Does that give us a little more confidence? Well, yes, because overall, if you look at the macroeconomic situation, India continues to be recognized as one of the fastest growing economies. Yeah. Also, the buffer of the forex reserves provides a sufficient amount of strength to the economy in terms of taking the challenges of the inflation which might be imported from the crude oil, especially because of the Middle East crisis. Another important aspect is that though many of the economies are wanting to understand the inventories of the crude oil and the other effects that are there, there is a continuous effect of the COVID pandemic which has affected the supply chains overall in the global markets as well as in the Indian market. There is a slowing of growth in China. There is other when you talk about US and you talk about UK, you see a 40-year high inflation. You see that many of the central banks, whether it's the Eurozone or whether it's UK or whether it's US, they have been tightening the monetary policy, increasing the interest rates, which does further affect investments and the job markets in globally as well as otherwise. So when we talk about Indian economy, there is a huge impetus that has been given on infrastructure, renewable energy, and many other sunrise sectors that are there. Also, there are a lot of structural reforms which have been introduced in the economy, primarily to bring about the benefits of the demographic dividend that the economy is in. Also, a lot of financial inclusion, digitalization, they have further aided growth and also made the economy in one thread, let's say by bringing about many reforms which were primarily involving informal economy into a formal economy, right, through demonetization or through the GST framework, or even supporting the farmers through the PM Samman Kisan Yojana, or many others that are there. Right. इसी बीच मुंबई से हमारे श्रोता हैं हरीश जी, मार्केट मंथ में आपका स्वागत है। प्रश्न पूछिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैडम नमस्ते। जी नमस्ते। ये मैंने इंडिया में एडिबल ऑयल का स्टेटस कैसा रहने वाला है? जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। थोड़ी आपकी आवाज साफ नहीं है, दोबारा पूछ लीजिए। दोबारा अगर अगले क्वार्टर में इंडिया में एडिबल ऑयल की क्या स्टेटस रहने वाला है? किस चीज का क्या रहने वाला है? एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल।
जी मैम। जी देखिए, एडिबल ऑयल की कुछ समस्या आई थी बीच में, जिसके अंदर प्राइसेस राइज हुए थे क्योंकि ओवरऑल सप्लाईज पे इफ़ेक्ट हुआ था। पर गवर्नमेंट कंटिन्यूसली वॉच पर है कि कोई भी प्राइस स्पाइक ना हो जिससे जो है फूड इन्फ्लेशन बढ़े या आपके जो मार्केट्स हैं उस पे असर आए। तो इसीलिए यही देखा जाएगा कि एडिबल ऑयल की प्राइसेस ज़्यादातर स्टेबल ही रहें। And they have come down actually. They had gone up, but now they've stabilized, right? Stabilized. Yeah, right. And now let's take a look at the Asian and European markets. जी Yes, जी Vibhuti. Yes. एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त देखी गई। केवल जापान के निक्केई में 1% की गिरावट थी। एशिया के अन्य प्रमुख देशों के सूचकांक की बात करें तो दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.3% वृद्धि, चीन के शंघाई कंपोजिट और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक दोनों में 0.1% की बढ़त हुई। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.1% बढ़ा। दिन के कारोबार में यूरोपीय बाजारों में भी तेजी रही। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 0.5%, फ्रांस का कैक 0.6% और लंदन का फुटसी 0.8% के ऊपर कारोबार कर रहा था। इसी बीच थाने से हमारे श्रोता हैं गुरुनाथ। गुरुनाथ जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। जी जी यामिनी मैम को भी नमस्कार। जी नमस्कार। मैम मेरा क्वेश्चन है जो लॉजिस्टिक एंड ये जो हाँ जी। जी प्रश्न पूछिए गुरुनाथ जी। Hello. Hello. अच्छा हेलो। हाँ मैं हेलो जी मैम, जी जरा लाइन ठीक से आवाज आ रही है? हाँ जी, आ हाँ जी। रही पूछिए प्रश्न। ये शिपिंग एंड लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में पूछना था मैम। ये इस पे ज्यादा चर्चा नहीं होती है, तो इस सेक्टर में जो कंपनी है इसमें इन्वेस्ट करना कितना फिक्स रहेगा? और मैं एक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने इस कंपनी ने इस सेक्टर का जो ये आईपीओ लॉन्च किया था, तो ये कैसे तो थोड़ा सा बताइए। थैंक यू। जी देखिए, लॉजिस्टिक्स पे काफ़ी हद तक काम हो रहा है प्राइमरीली क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप देखें सागरमाला भारतमाला प्रोजेक्ट और इवन कोस्टल लाइंस को डेवलप करने की बात की जा रही है। और जहाँ तक आप अगर सी एरिया में भी देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट है। जो सामान फ्रेट्स के तरफ से आता है उसके तहत और जो अब कंज्यूमरिज्म के तरफ कोशिश की जा रही है कि शिपिंग इंडस्ट्री को या सी एरिया को यूज़ किया जाए, उसके तहत इनमें काफ़ी ग्रोथ नज़र आती है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, आप हमेशा कंपनी को देख करके और कंपनी की जो कोर बिजनेस है उसको देख करके निवेश करें और उनको कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और उन पे क्या रेवेन्यूज़ मिल रहा है उसके ऊपर देख करके जो प्रॉफिट्स वो कमा रहे हों तभी निवेश करें। But Dr. Yamini, don't we see that the government, after so many years now, this government is now taking a very hard look and strategically they are working at the logistics so that, like the way the highways are being built so that the time consumed would be less, the fuel consumed would be less, and ultimately we are moving very high on logistics front. So that should be an advantage. There has been a constant effort that can be observed where whether it's the speed with which the national highways are being constructed, Yes. or in terms of defining the projects, whether it's ports, airports, or anything else, there has been a continuous effort to ensure that there is a speed picked up in every transportation, whether it is goods or it is passengers, whether you talk about trains, which are Vande Bharat, or you talk about freight trains, or you talk about anything else. There has been a constant effort to improve upon the overall logistic states as well as improve the surroundings of the logistics that are there. Also to ensure that the costs though may be reduced, but one of the costs which still remains is the petrol cost, Yes. which has not come down for a lot of people. But otherwise, the
the kind of logistics one would use from air, rail, roads, they have been somewhere or the other have been providing some benefit to the businessmen as well as to the consumers. And we're making it very efficient now. Yes, now. one of the segments is the Gati Shakti, which we talk about. And waterways are now being included. Waterways And are also being included. Also, the fact that now it's very interesting to know that now we're not talking about just 3 trillion economy. We're talking about $30 trillion economy by in the next 2047. 2 decades. Yeah, that would be really. We look forward to that. Well, right now we look forward to a caller called Sukhdev. He's calling us from Delhi itself. Ji Sukhdev ji, hello. Good evening, Dami ji and Martin Good evening. team. जी गुड इवनिंग सवाल पूछे जी. Will there be any hurdle to get the money from the bank by the nominee in the absence of proof of date of birth, but having PAN card? If hurdle is there, then what is the remedy? Usually when the nominee is nominated to a bank, his credentials are identified through the KYC documents that are there, which includes your Aadhaar, your PAN card or your passport or any other specific document which the bank would accept. Again, for the nominee, it's important that they have given the details. The details have been given by the person, and with that, the matching of the date of birth is matched with your KYC documents. In fact, now we see that the government banks have become very particular. Very often the KYC form is asked to be refilled because they want to ensure that all your details, your house address, your name, nothing is all on record and it's all straightened up. They're also now insisting a lot on some kind of nomination being there, because I believe the banks have a lot of problems, a lot of money is lying waste just because somewhere along the line some people have not written a nominee in their banks and they are no more. So the banks, those accounts are lying idle. So I think that's a good step that the government banks have become very strict as far as nominations are concerned. Well, there has been an effort by people as well as by the banks to ensure that their accounts are having nominees, so that in case of any untimely or any death, their legal heirs or the nominees usually receive the money, because otherwise it is a lot of paperwork and difficulty to get the money from the bank to the legal heirs also. Right. और इसी बीच एक अच्छी खबर जान लेते हैं. कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने वर्ष 2023-24 में 100 मिलियन टन कोयला डिस्पैच का लक्ष्य प्राप्त किया है. कोयला मंत्रालय ने कहा कि पिछले वर्ष कंपनी ने लगभग 85 मिलियन टन कोयला भेजा था. मंत्रालय ने कहा कि 80% से अधिक कोयला बिजली संयंत्रों को भेजा गया. आपको मालूम है कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों में से एक है. Well, here we have a story on coal. We are now moving very fast towards renewable energy. We also have nuclear energy. 6% of our energy needs are met from the nuclear energy plants. We're also moving towards hydro energy. Where do you see our dependence on coal? Of course, immediately we cannot shift to renewable or electricity, like we have electric vehicles going on. And I believe the new transportation, the commercial transportation will be more electricity oriented rather than diesel and petrol oriented. So where do you see the country going? It is a transitionary phase, of course, but our dependency on coal will not be taken away immediately. How do you see that? Well, there is a constant commitment on the part of India towards climate change and towards adoption of renewable energy sources, moving toward net zero emissions. Again, the aim is to ensure that the dependence on fossil fuels is reduced. Coal being one of them again. But again, one needs to recognize that the support facilities, or whether it is any kind of
facility, whether it's a car or it's a television or it's anything, they work on specific factors, and these are not suddenly turnable to, let's say, solar energies or electric vehicles or others. So it takes time for the transition to happen. Like the electric vehicles were introduced long back. Even when you talk about hydroelectricity, it took a long time to move from the thermal to the hydro. Right. And then we are exploring the wind energy, and we are also exploring solar energy. Yes. And you can see in a lot of incentivization by the government in terms of subsidies or the others to provide for solar panels to people to move to electricity. Even farmers were given an incentive that if they have barren lands, then they may actually have a solar plant installed and they can produce electricity. So these are certain things that do make a difference in terms of your commitment towards shifting from one source to another. It is also a very important aspect of discussion in the G20 meet that we had. True. No? Yeah. Now we are joined by Atanu Saha. He's a regular listener and regular caller. He's calling us all the way from Kolkata. Ji Atanu ji, sawal पूछें. Yes. Good evening. I call you from Kolkata. Atanu Saha. Ji, good evening. My Ji. question is, this is why worldwide agricultural product price going up day after day by day. So this is my question. Thank you very much. When we talk about agriculture production in India, there have been new milestones that have been achieved, whether it is food grain or others that are there. However, we still have short of supplies in terms of good quality products, and also the petrol prices are continuously rising because again crude oil prices rise and they do make a difference. So they affect your agriculture produce that reaches to the retail level. So there's a difference between the wholesale level and the retail level. What the farmer sells at is not the same price at what is available at the retail price. Again, there is a large variation in terms of the agriculture produce which one receives. And then there is logistic deficiency in terms of transferring the surplus producers to the regions where there are shortfalls. So that logistic deficiency again makes it difficult for the agriculture produce to be made available at the lower prices. Right, let's talk about oil now. Oil prices slipped more than 1% today as investors adopted caution approach ahead of a US Federal Reserve policy meeting and China's manufacturing data due this week. In intraday trade, Brent crude was trading at $89.63 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was trading at $84.60 per barrel when reports last came in. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर मंथ के लिए सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सोना 32 रुपये की तेजी के साथ 61,188 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। दिसंबर अनुबंध के लिए चांदी भी 633 रुपये बढ़कर 72,350 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में दिन के कारोबार में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $2,004 और 90 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी $23 और 33 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। Is it this the right time to buy gold, Yamini? Of course, it's the festival season, and at 61,000, we've seen far more. Far higher rates earlier. A quick comment. Well, I think gold is always something that has attracted attention. It depends upon the pocket, and it also depends upon the interest to buy gold. Right, and Indians are always very happy to buy gold. Well, friends, that's all we have for you in this session of Market Mantra. Thank you, Dr. Yamini, for joining us with your views and reviews. But friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Key domestic stock ends around 0.5% up. Sensex closes above 64,100 mark. Nifty settles near 19,150 level. Oil prices slip more than 1% ahead of a US Federal Reserve policy meeting. And Coal India subsidiary Southeastern Coalfields Limited achieves 100 million ton coal dispatch for 2023-24. That's all we have for you, friends, in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Vibhuti Mishra signing off. Namaskar. नमस्कार।
This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu.